Good evening, everyone. Am I audible to you guys? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Please put your videos on first. Very good evening to everyone. Good evening, sir. So, Good evening, sir. Good very evening, good, sir. very good evening. So, first of all, I think some of the candidates are still to. Okay, let's go ahead. So, first of all, I welcome you all to this, amazing and very selectively curated program. Here we are going to have a very close group, and we're trying to ensure that the ideas that we're going to put forward in this program going forward from today itself are going to be transformative. But as they say, first things first. So let's start with a little ice-breaking session. I'll first like all of you to introduce yourself. Now we have a brief introduction of most of us. Some of the candidates, I think they have not joined the session today because of some commitments. So we have a brief introduction about each other. It was important to know each other, and because that's the beginning that we need to make. Now, first things first, let's now come to the business end of things. Today's session is basically towards orienting you towards this exam process, demystifying a lot of things around that, and also how we plan to go forward in the next 1 year, next 6 months, next 3 months, and obviously the next 1 month as well. So short targets, midterm targets, and long-term targets. So first of all, you have to understand that around 10 lakh people are filling the exam forms every year for the civil service examination. And around 4 to 5 lakh people appear in the prelims. And out of that 4 to 5 lakh people, we have around 10 to 15,000 qualifying the prelims. So that's the hit ratio is very less. So why out of so many people who are writing the prelims, only 15,000 are getting to write the mains? And who are those people who get to write the mains? And when you write the mains, only around 2 to 3,000 people are getting to appear in the personality test. I call it a personality test. And what we have done today, Abhinandan is not available. Okay, we'll go ahead with the session. So what was this motto of this session today also? Because we believe personality test cannot be bifurcated from your entire preparation. Your prelims, mains, and interview has to be integrated. From day one itself, you have to be confident enough to speak in front of, when you go into the interview panel, you will be having 6 to 7 very senior people out there who have experience even twice your age, more than 30 years of experience in public life, senior bureaucrats, economists, academicians serving in the IMF or big institutions. So for that, we cannot prepare ourselves for the interview after we qualify the means. That is a certain recipe for disaster. The preparation for interview starts today, from the day one itself. So that is going to be the approach. We will encourage you and we will have one-on-one sessions where we will work on your individual personality traits. That what is the thing that you need to do to improve and become a more vocal, more confident, and a more exuberant youth that the country needs. That is going to be the approach. Now, coming to the study plan. So, we are going to be starting tomorrow with 2 classes every day, as has already been discussed. You can take a pen and paper and maybe note down a few points that I will be, telling you. You can note down a few things.
So is the screen visible to you guys? Yes, sir. Okay, wonderful. So first of all, see what we are going to do. We are going to be starting with our prelims preparation. That is going to be our first thing. So in prelims, what are the components of the prelims? You have to know that. So we have two papers, first of all. We have a GS paper. We have a CSAT paper. Both are of, how many questions are there? 100 questions? Yes, sir. And in CSAT, we have around 80 questions. 80 into 2.5. Every question is of 2.5 marks. And here every question is of 2 marks. All right. This paper is going to be, the marks will be accounted for. This will be, marks will be accounted for this paper. All right. And this will be a qualifying paper. But this is the paper that creates trouble for most of the candidates. People score good in GS paper. They score very good in GS, but they flounder. They flounder in CSAT. CSAT में 66.66 marks लाना भी परसेंट नहीं 66.66 मार्क्स लाना भी बहुत एक प्रॉब्लम का एक इशू हो रहा है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए. सो ये चीज काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको कि आपको सीसैट को भी लाइटली नहीं लेना है. So you don't have to take CSAT lightly. Understood? That is going to be important. Now let's first break up how we are going to, if you have doubts in between, you can pitch in and you can ask then and there. Or if you have doubts, we can take it in the end also. Today, we are going to just have a brief, broad outline and streamline our entire process. So what are the subjects in the GS, General Studies Prelims? Can anyone tell me? So it's history, geography, economics, polity, then current affairs, science and tech, and environment. So I will club them into two blocks. That the core block that we have, that is going to be the major focus of our preparation. That is going to be polity. Polity is the most important subject. Then we come to history. In history also, we have modern history. That is very, very important. After modern history, we have geography, and then we have economy. So if this core block of yours, you have a solid preparation in these four subjects, I think 60 to 65% of your prelims GS paper is taken care of. This is going to be very, very critical. तो हमने इन चार सब्जेक्ट्स में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़नी है. इसमें हमने इंश्योर करना है हमारी 95% एक्यूरेसी होगी. We are going to ensure 95% accuracy. That will come with multiple revisions, analysis of previous year questions, and at the same time, solving a lot of mock tests. All of that we will do. On the part B of this, I will keep the subjects like we have environment, then we have science and technology. All right. Then we have culture, and then we have current affairs. So I will keep these because more or less, these subjects, they have a lot of current orientation. अब history है, history change तो होने वाली नहीं है. History will remain as it is and as it was. History वही रहेगी. तो आपको ये वाले subjects हैं, इनमें हम ज़्यादा focus करेंगे शुरू में. And these are the subjects where you need to be focusing more on your current affairs. So this is going to be the broad outlines. यहाँ से आपके 200 में से कट ऑफ कितना जाता है जीएस में? आपका पिछले 2-3 साल में 80 to 90 के बीच में गया है. 80 to 90 मार्क्स. पर हमारा फोकस 80-90 नहीं होगा. Our focus will be a minimum of 100 marks we are targeting in the prelims GS paper. That is going to be the bare minimum. Prelims में 100 marks is going to be the bare minimum that we are going to target. Understood? I would want you to be interactive also. Otherwise, it becomes a monologue. I want it to be a dialogue. Please respond accordingly so that we have a more of a dialogue-based paper.
And if you have any doubt anywhere in between, feel free to ask. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Feel free to ask. I think Major Abhinandan is there. I think if he is there, we can have it. So, hello, Major. Hello, Abhinandan. Hello, Jai Hind, everyone. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. How are we doing? Jai Hind, sir. Jai Hind, everyone. Jai Hind, everyone. It's so good to have you all with us today. And I'm sure that you have got the idea. Navjot sir has very beautifully summarized everything that is to be done. So I will not take much of the time and interfere this session. I just wanted to take a moment and welcome you all, because it is an initiative which is very close to both of us. We started it only because we had that idea that there is a requirement, that there's a lot of confusion going on among the people, among the students. So the whole idea is to make sure that you, maybe 6 months from now, you actually feel that you are ready for the biggest dive of your life into the civil services. So that is the whole idea. So I'll not take much time and let Navjot sir continue with the session. Once again, welcome you all, and I'm sure that all of you have to be ready. And aaj subah hi I was just wondering a few things, and just be ready that you will be grilled and you will be had nicely in the military way, in the Fauji way. Anubhav will vouch for it, that something exciting and something hard is up for you all. But definitely, अगर आपको कोई query होगा, कोई आपको support की जरूरत है, तो feel like that we both are your elder brothers, and it is now a family affair, and it is not something that we are running an institute. It is not. It is just a one-time initiative, and you all are a part of the family, and the family is called Super 50. And someday we will expand this family. I have a bigger idea called the Young Indian Brigade, which we will someday discuss. The Super 50 is just the beginning of that. So let's start it on a positive note. And I'll request Navjot sir to continue from here. I'll have a few meetings now. I will interject here and just impress upon this message that you have brought out, that how important it is that the ragda is how important is the ragda, because the USP of this program is not going to be what you get in conventional coaching centers. The coaching centers, they may provide you fancy notebooks, they may provide you a lot of lucrative things. Our idea has never been to entice you. Our idea has been to give you authentic information, something that will help you qualify the examination. So here, as Abhinandan said, we are your elder brothers, and our idea is to put you on a path that is required to be taken to qualify this examination. That is going to be our idea here. जिस पैटर्न से अभिनंदन ने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, बिल्कुल बेयर मिनिमम जो आर्मी का तरीका है, बेयर मिनिमम फॉलो करके लेफ्ट राइट सेंटर नहीं जाना है, बिल्कुल फोकस लाइक यू हैव अ टनल विजन, one book, one subject, one book. That is going to be our limitation. For example, I have mentioned some of you to whom I have already talked to, that for example, we have a subject, we have the polity, we are not going beyond Lakshmikant. We are not going beyond Lakshmikant, and we are going to make it our Bible. Every subject, that source has to be our Bible, and we are going to, make that our own. We have to own that book, and that is where our role comes in, to minimize the noise that is around there. अभी जैसे हम आज शुरू कर रहे हैं, आज हमने शुरू किया, आज मोटिवेशन हमारा बड़ा हाई है. ये एक 100 मीटर डैश नहीं है, ये एक मैराथन होगा. इसमें हमें पिटफॉल्स भी आएंगे, हमें लो मोटिवेशन भी आएगा, फिर आप लेफ्ट राइट आपको और एडवाइसेस भी मिलेंगी. दैट इज वेयर हमारा रोल आता है. आपने फॉर एवरी एडवाइस, फॉर एवरी गाइडेंस, फॉर एवरी मेंटरशिप, वी आर अप्रोचेबल टू यू, एंड दैट इज वेयर वी वांट टू मेक श्योर कि आप फालतू की चीजों में मत जाइए. आप फालतू इन द सेंस व्हेन आई से दैट फालतू, इट इज नॉट reading books that are non-essential, not reading books that are not required for the examination. That is the bare minimum. वही अभिनंदन और वो हमेशा एक बात करते हैं वॉरियर वाली, कि जापानीज सामुराई क्या होता है? He is the one who practice one move 1,000 times, not 1,000 moves once. So we are going to practice that one move 1,000 times, and we are going to be their samurais. I think Abhinandan can give a concluding message if you have a meeting to go. Yeah, I've done with whatever I had to say. So I'm sure that all the students are clear as to what awaits them. So my best wishes, and let's get going today.
So Jai Hind, See everyone. you. Please Jai Hind, continue sir. with your class. Okay, Jai Hind, okay, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. So you got the idea, all of you? Abhinandan has some meetings today, so he couldn't be available for the entire session. So I think, so we were discussing about our GS syllabus and how are we going to approach it. तो जैसे आपने देखा है 200 नंबर का पेपर होता है ना, it is a 200 marks paper. It is a 200 marks paper. ठीक है? If we break it down, so major chunk, if we break it down, इसका major chunk आपका पॉलिटी में से आपके कवर हो जाएंगे. पॉलिटी के में कितने सवाल आते हैं? Can anyone tell me जिसने थोड़ा रिसर्च किया होगा? 10 to 15. Yeah, around 15 questions you will get from polity. 15 questions you will get from polity. Then we have सबसे इससे जो एक और important जो chunk आता है आपका, that is modern history. History में भी modern history, ठीक है? There also traditionally we used to get a lot of questions there, but now at least 7 to 8 questions are there. But these 7 to 8 questions are like easy to attempt. They are like doable. इसके बाद आपका जो मेजर एक और सब्जेक्ट जैसे हमने पहले भी बात की, इकोनॉमी में अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट, 15 से 20 सवाल. एंड दे आर गोइंग, इफ यू अंडरस्टैंड इकोनॉमी इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. तो हमारा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होने वाला है. इफ वी आर कंसेप्चुअली क्लियर विद द सब्जेक्ट्स, तो हमारे ये जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं 4, इसमें हमारा हिट रेशो जैसे मैंने पहले बात की 95% से ऊपर होने वाली है. दैट इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच. और फोर्थ सब्जेक्ट है जो हमारा, दैट इज ज्योग्राफी. हियर ऑल्सो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडेड, यू विल गेट अराउंड 15 क्वेश्चन. तो रफली अराउंड 60 क्वेश्चंस, इसके ऊपर नीचे हो सकता है, बट रफली 60 क्वेश्चंस आपको इन 4 कंपोनेंट से मिलेंगे. इन 4 कंपोनेंट से हमें ये 60 सवाल मिलेंगे. इनके लिए अब हमारे सोर्सेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. जो बुक्स आपने लेनी है बिफोर, बिकॉज नाउ फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू बी हैविंग 2 क्लासेस. Okay, about the timings, the morning session will be around 7 to 9 or 6 to 8, most probably 7 to 9. So all of you are okay with that timing? Yes. Morning 7 to 9, because Yes, sir. Major Anubhav, you will be okay with Yes. that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Comfortable, sir. Okay, okay. So morning class, let me write it down as well. For in morning session will be 7 to 9. Any changes that will be intimated to you in advance. And evening, same 7 to 9 or 6 to 8. Evening, what time is comfortable to you guys? 6 to 8, 7 to 9, or 5 to 7? 5 to 7, sir. All of you comfortable with 5 to 7 or 5:30 to 7:30, whichever is most convenient, because जो college वाले बच्चे हैं 2-3, 6 to 8 is fine. Please give me a go ahead. Sir, 5 to 7. 5 to 7. 5 to 7. Everyone Yes, sir. give a high five on that. Yes, sir. 5 to 7. Okay. Okay. Evening we are having 5 to 7. Thank you, sir. Half an hour ऊपर नीचे हो सकता है, but it's like this only. It will be going to be 5. So from tomorrow, morning class will be taken by Abhinandan sir. He will be starting with your polity. Okay. He will be starting with your polity class. For that, आपको पता है कौन सी किताब लेनी है? आपने ले भी ली होगी. I'm Lakshmi. लक्ष्मीकांत, ठीक है? एम लक्ष्मीकांत की किताब है. और कुछ नहीं लेना है इसके अलावा. That is the only book that you need. Evening class I will be taking. Tomorrow we are starting with geography. ठीक है? We are starting with a geography class. ठीक है? तो ये हमारा क्लास का स्केड्यूल रहेगा कि हमने 7 to 9 and 5 to 7. That is sorted. Anyone have any issues with the timing can tell us now. No, sir. All sorted ना? ठीक है. अभी देखिए बाकी भी किताबें आप नोट कर लीजिए. किताबें आपको पहले भी बता दी गई होंगी, but still I'll go today because I wanted any doubts you have regarding the sources जो हमने रेफर करने हैं वो आज हम क्लियर करेंगे उनको. So what are the sources that we are going to refer? Let's go for that. First of all, we have polity. I already mentioned we are going to take Lakshmikant book. Nothing outside of that. Plus इसमें हम क्या करेंगे?
करंट अफेयर्स जो हम अलग से पढ़ने वाले हैं वो इसमें सप्लीमेंट करेंगे। और क्या सप्लीमेंट करेंगे? PYQs, दिस विल बी कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन वी हैव, आई विल गो बाय सब्जेक्ट वाइज, देन वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री कब से शुरू होती है? विच ईयर? any demarcation anyone can tell me? I think Kavita is she's written a couple of exams, she can tell us. Yes, sir. From 1600. Reward 1600 1600 1700 onwards. Okay, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी 1920. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब पढ़ते हैं आप? Spectrum. स्पेक्ट्रम, Spectrum. राजीव अय्यर, या somebody saying something? Bipin Chandra also. No, that is the, we don't have to do multiple books, that's the thing. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें एक ही किताब पढ़नी है, वो है स्पेक्ट्रम, एंड एट मैक्स 12th क्लास NCERT। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम एंड एट मैक्स 12th क्लास। सर वो बिपिन चंद्रा की तो है NCERT। नहीं, एक तो NCERT बिपिन चंद्रा की है, बट एक जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो 600 पन्ने की किताब है, वो नहीं पढ़नी। एक बुक भी आती है अलग से, दिस इज द 12th क्लास NCERT written by बिपिन चंद्रा सर, बट देयर इज दिस बुक ऑल्सो, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, दैट इज अ बिग वन, वो नहीं पढ़नी है आपने। ठीक है, हमें मिनिमाइज रखना है सोर्सेज को, ताकि हम मैक्सिमम उसमें से आउटपुट निकालेंगे। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का विल बी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम देयर। देन वी हैव एंशिएंट हिस्ट्री। कहां से पढ़ेंगे आप? RS शर्मा से। RS शर्मा 11th NCERT, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। एनी डाउट्स अप टिल नाउ? देन वी हैव मिडिवल पढ़ा है किसी ने? मिडिवल हिस्ट्री? नो सर। कविता आप कहां से पढ़ते हैं? Sir, NCERT and Tamil Nadu SCRT. NCERT एंड सर Tamil Nadu book. NCERT सतीश चंद्र सर। हाँ, एक ही NCERT पढ़नी है। इसमें एडवाइजेबल, इसमें आपके पास चॉइस है। एक तो 7th की हमारी NCERT है, मिडिवल की, ठीक है, बिकॉज इसमें हिट रेशो बहुत कम होता है मिडिवल में ना, तो इधर वी डू दिस और वी डू 11th वाली। आई वुड एडवाइज हम 7th वाली करेंगे, ठीक है। ये सतीश चंद्रा वाली है, ये रोमिला थापर मैम की है। तो we will do either of these as a source, we'll keep these as a source, ठीक है। इसके बाद कौन सी किताब है? सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर आ गया इसके बाद हमारा। कल्चर के लिए हमने नितिन सिंघानिया सर की एक किताब आती है, वही हमने पढ़नी। उसका भी सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, नितिन सिंघानिया। ज्योग्राफी और पॉलिटी की बुक्स हैं आपके पास? ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी का भी बताएंगे। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सबने ले लिए? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ज्योग्राफी के लिए हमने किताब जो पढ़नी है, हमने पढ़नी है 11th क्लास की NCERT। क्लास 11 NCERT की 2 NCERT हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, एंड देन वी हैव इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल। ये 2 बुक्स हैं, ग्रीन कलर का कवर होगा इनका। ये 2 किताबें पढ़नी है आपने। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी को हम सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, दैट आई विल टेल यू लेटर। फर्स्ट विल लिमिट टू दिस, प्लस वी विल गेट अ GC लॉन्ग बुक। GC लॉन्ग का नाम सुना है? GC लॉन्ग की किताब है? यस सर। हाँ, ये GC लॉन्ग की किताब आपने पढ़नी है। अभी तक कोई कंफ्यूजन? सर ओल्ड हिस्ट्री सर सॉरी सर मेडिवल में आपने जो NCERT बोली है वो ओल्ड है या न्यू है 7th और 11th की? ओल्ड NCERTs, ऑल ओल्ड NCERTs। ओके सर। इसमें लिख लीजिए NCERTs व्हेन आई मेंशन ओल्ड NCERTs। सर ऑल द NCERT ओल्ड ना सर? हाँ, ज्योग्राफी की लेकिन नई वाली चलेंगी। ज्योग्राफी की न्यू NCERTs विल डू। हिस्ट्री की व्हेन, बिकॉज हिस्ट्री में क्या होता है ना, हिस्ट्री में जो पुराना टेक्स्ट होता है दैट इज मोर रिफाइंड। अभी क्या है,
अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें उन्होंने काफी कुछ खत्म कर दिया बुक्स में से। वो दैट इज ओनली 50 to 60% ही उसमें इंफॉर्मेशन बची है, तो वो रेलिवेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पर ज्योग्राफी के लिए न्यू विल डू, हिस्ट्री के लिए यू विल हैव टू गो विद द ओल्ड एनसीईआरटीज। ठीक है, एनी डाउट्स? ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज ले लिया सबने? क्योंकि सर। हमने एक आपको मैसेज एक आपको इंफॉर्मेशन पास की होगी जिसमें बुक्स मेंशन कर रखी होंगी। यस सर। तो आपने ये दो बुक्स ले लीजिए अभी, जीसी लॉन्ग चाहे अभी ना लीजिए, अभी ये वाली 2 बुक्स ले आइए, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल। जिनके पास नहीं भी हैं, ऑर्डर देम टुडे सो दैट दे रीच यू इन अ couple of days, because from tomorrow onwards, tomorrow 5 PM we are starting with geography full on। ठीक है, तो हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सी इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह विल बी गुड, रमेश सिंह बुक्स, this will be more than sufficient। Abhinandan sir will be taking economy for you। ठीक है, I'll be taking geography and history, Abhinandan sir economy and polity। okay, तो ये आपके यहाँ से ये हो गया। अभी आपकी environment, science, इनके लिए will tell you later, because इसमें बड़ा ही selectively पढ़ना है। कुछ लोग PMF IAS की किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग शंकर IAS की पढ़ते हैं, तो we will advise you accordingly, उनमें से बेस्ट हम कहाँ से फिल्टर आउट करके आपको बताएंगे उसमें। ठीक है, तो अभी एनवायरमेंट और साइंस की किताब मत लीजिए, अभी आप ये 4 किताबें आपके पास होनी चाहिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। ठीक है, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डू द करंट अफेयर्स? न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है आप में से? डू यू रीड न्यूज़पेपर्स? हिंदी इज लेजिबल टू एवरीवन ना, सब लोग हिंदी समझते हैं, यस सर। है ना? करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप लोग? द हिंदू। सर द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस सर। हाँ, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, सबसे पहले तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए। ये इसमें तो कोई कोताही नहीं है, देयर इज गोइंग टू बी नो लैक्सिटी ऑन दिस। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक आपने पढ़ लेंगे। इसके साथ वी विल बी टेकिंग करंट अफेयर्स की क्लासेस, जहां पे वी विल प्रोवाइड यू नोट्स। उसमें आपको करंट अफेयर्स के लिए यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। करंट अफेयर्स के वी विल गिव यू printed notes, handwritten notes, whatever we will give you, and we will have classes also। ठीक है, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, बिकॉज अल्टीमेटली द थिंग इज, हम जितना पढ़ लेंगे अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो फिर हमें एग्जाम में फायदा नहीं होगा। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, क्योंकि एडिटोरियल एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पहले बात की कि इंटरव्यू की तैयारी 1 साल बाद नहीं शुरू होगी, अभी से होगी। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ व्हाट? इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, which news debates do you watch? Do you watch any news debates? नो सर। उसके लिए आप, वैसे तो टाइम बड़ा लिमिटेड है, सर ज्यादा नहीं जाना है। हाँ जी बोलिए। सर ड्यूरिंग फ्री टाइम आई ट्राई टू वॉच सनसेट टीवी, सो या दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू रेकमेंड। संसद टीवी आपको वॉच करना है। उसमें देयर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, लाइक अभी तो बिग पिक्चर शायद बंद कर दिया उन्होंने। There used to be big picture. Lot of, you can watch old debates also about a lot of issues. Then there is, I think, about foreign affairs के ऊपर security scan होता है उनका, एक security scan that is there। इसके अलावा geopolitical issues पे भी उनका एक प्रोग्राम है। आपने इसके अलावा ये जो आज तक, इंडिया टीवी, ये न्यूज़ बिल्कुल नहीं सुनना है। It will corrupt your mind, because for the exam that is not needed। So apart from that, this will help in what? This will help you in opinion building। ठीक है, एडिटोरियल्स और ये जो डिबेट्स हैं, ये आपके माइंड को ओपन करेंगी टू न्यूअर आइडियाज, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड आप स्क्रूटनाइज कर पाए उन चीजों को कि हाँ, ये फॉर एग्जांपल फार्मर्स इशू है, फार्मर के 3 बिल आए थे, उनके जो नुआंसेस थे, देयर विल बी समवन फ्रॉम नीति आयोग, सम मेंबर फ्रॉम नीति आयोग विल बी सिटिंग देयर, some expert from economy will be sitting there, some government representative will be sitting there, they will analyze these topics and that will help you understand also। ठीक है, ये आपने more or less ये आपने करना है। अच्छा, how many of you are working apart from Major Anubhav, how many are working or have classes in the day?
Do any of you have Yes, classes sir, in the I day? have. Sir, You I have have classes? Yes, sir, yes, sir. My Okay. classes. How many hours? How many hours? Like full day you have Sir, classes from like 11 to 2. 11 to 2. And Saurabh? sir part-time work. Okay. Anyways. Sir, So what? sir, I have optional from 2 to 5. So sometimes if it gets earlier, so I'll join sharp around 5. Otherwise, it So is we can 2. do it 5:30 na, in that case, because if Sir, others don't have no problem, sir. Even you can do 5:15 also, sir. 5:15, we'll do 5:10, 5:15, we'll do that because you have a class, so you should not miss out on this class. No worries. So why I asked this, आपका daily का scheduling कैसे रहेगा? That is what I was wanting to tell you. Left right center जाने का आप iterate कर सकते हैं अपने हिसाब से, but wouldn't want you to go too much left right center. तो आपकी morning class हमारी 7 to 9 थी. That is going to be, आप उठ के first class ही attend करेंगे. तो morning 7 to 9 a.m. is going to be your, currently it is going to be your polity class. ठीक है? अब what you have to do, अब क्लास के बाद 2 घंटे की क्लास कोई बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है. जो लोग, जिनका भी ऑफिस है या वो है, कोशिश करें वो लोग भी, और जिनकी क्लासेस नहीं है वो लोग भी. मे बी यू कैन टेक अ 15 minutes ब्रेक एंड देन सिट डाउन फॉर 30 minutes. जो भी क्लास में पढ़ाया, ठीक है, क्लास में पढ़ाया आपने, उसको आपने समराइज करना है. ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना है आपने. हमने एटलीस्ट 10 hours देने एवरी डे. दैट इज गोइंग टू बी आवर टारगेट. वी हैव टू पुट इन 10 hours. तो आपने ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना है. 30 minutes आपने बैठना है, जो क्लास में पढ़ा है उसको पढ़ लेना है पूरा, फिर से रिवाइज करना है, और लक्ष्मीकांत से भी उसी टॉपिक को पढ़ लेना है. ठीक है? तो 2 hours here, half an hour here, and plus another 1 hour you read that from Lakshmikant. This thing will be sorted. आपका वो जो मॉर्निंग क्लास का रिवीजन प्लस वो आपका हो गया. अभी इस ऐसा करोगे डेली तो आपका बैकलॉग नहीं होगा, नहीं तो 3 महीने बाद इतना पुलिंदा हो जाएगा कि आप नहीं कर पाओगे उसको. सो डेली आपको रिवीजन करनी है 15-20 minutes, वो जो क्लास में पढ़ाया, प्लस लक्ष्मीकांत को भी तभी पढ़ देना है. 2 hour class and another 2 hour class. So by 7 to 11 a.m. your polity class plus self study should be done. ठीक है? That is going to be your approach. That is the first thing. ठीक है? अभी आपके पास फिर कितने घंटे बचते हैं? 11 a.m. to 5 a.m. 5 p.m. तक आपके पास 6 घंटे हो रहे हैं. इसमें आप ब्रेक लीजिए, जो कीजिए. इसके बाद आप अपना ऑप्शनल को टाइम दीजिए. आपने अपना ऑप्शनल को टाइम देना है इसमें. This will go on till the end of January. Optional subject. You read 2 घंटे आपने, अब मैं आपको पूरा पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूं इसमें, आप ट्वीक कर लीजिए अपने हिसाब से ऊपर नीचे. 2 घंटे आपने अभी से डेली 2 से 2.5 घंटे, इफ यू वांट टू गिव, आपने अपने ऑप्शनल को देने हैं. जिन लोगों ने अपने ऑप्शनल अभी तक नहीं डिसाइड किए हैं, यू कैन फाइंड योरसेल्फ आल्सो एंड यू कैन टेक आवर गाइडेंस आल्सो. हम भी आपको गाइड करेंगे कि ये आप ऑप्शनल लेना है. लेकिन ऑप्शनल अगले 1 हफ्ते में आपका डिसाइड हो जाना चाहिए, जिनका ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं है. ओके? कैन वी हैव अ पोल? अभी किस किस का क्या क्या ऑप्शनल, एक बार जल्दी से हम पता करेंगे. विल स्टार्ट विद सर्वेश. व्हाट इज योर ऑप्शनल? Sir, mine is history. History. I think there was someone else also having history. I think Aditi, I think Yes, sir. you also have history. Okay. Anyone else has history? No. Vishwajit, what is your optional? So PSIR. PSIR. Anyone else with PSIR? Sir, I am confusing in PSIR and sociology. Okay. Anyone else with the sociology or PSIR? Kajal, what is your optional? So my optional is zoology. Zoology. And Zubin, what is yours? Public administration. Public administration. So we have very diverse set of options. What about others? Sir, I am confused between sociology and anthropology. So I'll be just taking your guidance. Who are confused? We'll first ask from those who have not taken their optional. Who has not taken their optional as yet? Sir, I have not taken. So what's your name? I cannot see your face. Sir, Major Anubhav, sir. I am not. Okay, Major Anubhav. Okay. You have not. You're confused between
Sociology and anthropology, sir. Sociology, I think more or less both have the similar syllabus. Sir. Anthropology is the more scoring subject, so we'll discuss about that. Who All, else? sir. Who else? Vishwajit, I guess, was confused. No, sir. Sir, I I have am taken confused PSIR. between. Someone else was So- confused. Saurabh was Yes, confused. sir. Okay. All else are their subjects decided? No, everyone else has their options decided. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Shivankar, have you decided your optional? No, sir, I have not decided my optional. Whatever you will suggest me, I'll take that as an optional, sir. Okay, I'll suggest you one thing. Go through the UPSC syllabus and study 4 to 5 subjects, their syllabus, and then we can discuss upon that also. Okay. So why I am asking this, because it is very important. Today is 16th of December. Today is 16th of December. और ऑप्शन पढ़ने का टाइम हमारे पास अब 45 डेज ही है मैक्स. नेक्स्ट 45 डेज हम ऑप्शनल पढ़ सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर्स अटेम्प्ट, बिकॉज प्रीलिम्स इज आल्सो वेरी ट्रिकी. तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम ऑप्शनल पढ़ ले जनवरी एंड तक, बट फरवरी ऑनवर्ड्स हमने फुल ऑन मतलब जीएस प्रीलिम्स मोड में आना है. Feb, March, April, May, hardly 3.5 months will be left. So these 3.5 months we're going to be full on. We are going to focus on our prelims. All right, that thing sorted. ठीक है. तो आपका डेली का भी शेड्यूल यही रहेगा. एक आपका पॉलिटी का स्लॉट रहेगा, ठीक है, एक आपका ऑप्शनल का रहेगा और एक आपका ज्योग्राफी का रहेगा. ठीक है. इसके साथ आपने करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए. अभी आई थिंक इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. This is going to be your this is going to be your broad daily outlines. ठीक है. अब इस हिसाब से चलना आपने. Any doubts as of now? Any questions regarding the book list or how we are going to schedule से related या किसी भी चीज से related as of now? If you have any doubts, feel free to ask. न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने? कुछ नहीं करना. न्यूज़पेपर से कोई नोट्स नहीं बनाने. नोट्स नहीं बनाने कोई भी. आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है. न्यूज़पेपर की भी मैं एक ओरिएंटेशन क्लास ले लूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना सर, कैसे है. हाँ जी, बोलिए. सर आजकल मतलब न्यूज़पेपर्स के भी एडिशन आते हैं, तो एक आईएएस एडिशन आता है, तो उसमें खाली आर्टिकल्स रहते हैं और एक फुल न्यूज़पेपर, तो उसमें से सर कौन सा पढ़ना है? आईएएस एडिशन आता है, उसमें क्या आता है? सर उसमें सिलेक्टेड आर्टिकल्स रहते हैं जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट रहते हैं उसमें. अच्छा, और जो दूसरा होता है उसमें क्या है, क्या वो फर्क है फुल उसमें? न्यूज़पेपर होता है सर. अच्छा, इसमें सिलेक्टेड होता है. यस अगर सर. आपको उसका एक्सेस है तो वो पढ़ लीजिए. ओके. बट मुझे लगता है कि थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको. दीन दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ा पता होना चाहिए. एक कुकून में घुस के न्यूज़पेपर एक वो चीज है, उससे आपको दुनिया में क्या हो रहा है पता चलना चाहिए. बेशक आप मैं न्यूज़पेपर में देखो आपको पढ़ना क्या है. सबसे पहले न्यूज़पेपर में आपको फ्रंट पेज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अभी. लेट्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी. कौन 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 डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है? बी ऑनेस्ट. पर अभी नहीं पढ़ रहे. सर अभी नहीं पढ़ रहे सर. ओके, आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए. आज से ही. आफ्टर दिस सेशन go and get your subscriptions of the newspapers जो भी आपको लेना है, and start reading. 45 मिनट्स से ज्यादा नहीं देना है. आप 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में टाइम दे सकते हैं न्यूज़पेपर. और पढ़ना क्या है? फ्रंट पेज आपको पूरा पढ़ना है. उसमें स्किप क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग ऑन जियोपॉलिटिक्स, समथिंग ऑन सिक्योरिटी, समथिंग ऑन अ गवर्नमेंट स्कीम, वो पढ़ना है आपने. लेकिन स्किप क्या करना है आपने? उसमें कोई पॉलिटिकल न्यूज होगी, किसी मंत्री ने किसको क्या कह दिया, किसने किसके ऊपर कीचड़ उछाला, कौन सा पार्टी ने किसके साथ मर्जर हो गया, किसको कितने वोट मिले, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस. आपको ये आपने सिलेबस अपने पास रख लेना है. एक सिलेबस की, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी एक प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल के सामने लगाइए. ऑल द टाइम्स एट योर स्टडी टेबल यू शुड बी हैविंग अ प्रिंट आउट ऑफ द न्यूज़पेपर. ठीक है. बिकॉज दैट विल मेक इंश्योर आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप करना है. दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल. ठीक है. तो फर्स्ट न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज है, फ्रंट पेज है, उसमें आपने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है. पॉलिटिकल न्यूज और जो इधर उधर की फालतू न्यूज उनको स्किप करना है. इसके बाद आपने आ जाना है डायरेक्टली, बीच वाला कुछ नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल पेज पे आ जाइए. दिस इज योर फ्रंट पेज दैट वी स्टार्ट, देन यू रीड द एडिटोरियल पेज. एडिटोरियल आपको कंप्लीट पढ़ना है.
इसमें क्या स्किप करना है? अगेन एनी पॉलिटिकल न्यूज। फॉर एग्जांपल किसी ने आर्टिकल लिखा होगा पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुई हैं, उसमें कौन सी पार्टी के हारने का क्या कारण था, एक पूरे 2-3 पेज पूरा पेज उस पे आया होगा, तो उसको नहीं पढ़ना आपने, तो वो आपने स्किप करना है। ठीक है, दैट ऑल्सो यू हैव टू स्किप। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट यू कम टू जियोपॉलिटिकल पेज, जो इंटरनेशनल अफेयर्स है। एडिटोरियल पेज आई थिंक 7th या 8th पेज होता है, एडिटोरियल पेज, है ना? उसके बीच में 2-3 पेजेस होते हैं, सर उसमें कुछ हिंदू में 4th या 5th रहता है सर। हाँ, मतलब इट चेंजेस, डिपेंड्स, इट चेंजेस फ्रॉम पेपर टू पेपर। इकोनॉमी सेक्शन भी आपको पढ़ना है। दीज आर द फोर थिंग्स दैट यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, फ्रंट पेज एडिटोरियल, जियोपॉलिटिक्स, इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स रहता है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सीरिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। अमेरिकन इलेक्शंस का प्रोसेस क्या होता है, व्हाट आर प्राइमरीज, व्हाट आर कॉकसेस। ठीक है, 2 पार्टीज कौन सी हैं वो पता होना चाहिए आपको, बिकॉज दैट इज जियोपॉलिटिकल न्यूज। बिकॉज मेंस में ये सवाल आता है जनरली, कंपेयर द इलेक्टोरल प्रोसेसेस ऑफ इंडिया विद द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो आपको माइंड में रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यू विल गेट टू लर्न। अब आपको इकोनॉमी पेज को कैसे यूज करना है, इकोनॉमी सेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी सेक्शन में एवरी डे दे विल यूज टर्म्स लाइक CRR, SLR, जिन्होंने इकोनॉमी बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए। देन देयर विल बी फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, these terms will be used. Then what you call as crowding out, इस तरह के टर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे। आप जब इकोनॉमी वाला सेक्शन पढ़ोगे या एडिटोरियल में भी इकोनॉमी का कोई आर्टिकल आएगा तो ये टर्म्स आते हैं। इन टर्म्स को आपने क्या करना है, यू हैव टू गूगल इट। कहां से पढ़ना, कहां से है? इन्वेस्टोपीडिया। इन्वेस्टोपीडिया कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से ही पढ़ना है। इन्वेस्टोपीडिया से आपने इसकी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, ब्रीफ में पढ़ना है कि CRR क्या हो जाता है। उसको नोट्स नहीं बनाने हैं, डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ मेकिंग नोट्स, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं इसके। आपको वो पढ़ना है वहां से, इन्वेस्टोपीडिया से। CRR क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर टू लेट्स अज्यूम 16th ऑफ फेब, अगले 60 दिन में, 60 डेज में, आप जब रोज ये टर्म्स आएंगी आपके सामने, आप उनको सर्च करोगे, रोज पढ़ोगे। आपको जो टर्म नहीं समझ आ रही वो आपने सर्च करोगे, पढ़ोगे। 60 दिन में आपकी जो इकोनॉमी की नॉलेज है, क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्या होती है, ये चीजें क्या होती है ना, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है। ये चीजें आपको ग्रेजुअली 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 पता चलती जाएंगी। ठीक है, और जब हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तब तक आपका एक थोड़ा सा माइंड में एक बेस बन जाएगा कि आपको इकोनॉमी में आप वो नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू इकोनॉमी। इसके साथ एक और एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा न्यूज़पेपर से, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एडिटोरियल ऑन सम गवर्नमेंट स्कीम, क्रिटिकल एनालिसिस किया है, उसमें कुछ फ्रेजेस यूज करते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी एक्सपर्ट पीपल, दे यूज सर्टन फ्रेजेस। सो व्हाट वी डू, वी नोट डाउन दोज फ्रेजेस। ये बस नोट करना आपने। ये क्यों, किसके लिए करना है आपने? ऐसे पेपर के लिए। ये आपने करना है फॉर द ऐसे पेपर। सब कुछ नहीं नोट करना है। एक दिन के न्यूज़पेपर से हफ्ते में सिर्फ 4 या 5 आपको ऐसी चीजें निकाल निकाल के नोट करनी है। फर्स्ट फ्रेजेस हो गए, सेकंड देयर विल बी सम केस स्टडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल you know about Popat Rao Pawar? Anyone knows about Popat Rao Pawar? Anyone can tell me? Who is Popat Rao Pawar? Yes, sir. Anyone? He is Yeah. he has got the award for I means ideal gram sevak. Sorry, sarpanch. What is he known for? ऐसा क्या किया उन्होंने? नहीं पता? अन्ना हजारे जी का नाम सुना है? Yes, sir.
सबने सुना है? किस चीज के लिए पॉपुलर है वो? डोंट टेल मी दैट इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली हड़ताल के लिए. नो, टेल मी व्हाट वाज द मेन, what is he known for? Lokpal bill. That is not what I'm asking. What was his original, what is his USP? Anyone can answer this question? Can anyone tell the village of Anna Hazare ji? Ralegan Siddhi. Ralegaon Siddhi. So what is he known for in Ralegaon Siddhi? So Anna Hazare ji, Hanji, someone is saying something? Rural development. Not exactly rural development. The USP with which Anna Hazare is associated is transforming village economy through rainwater harvesting. Rainwater harvesting. You also must mention about this lady from Kenya called Wangari Maathai. Wangari Maathai. She and Anna Hazare are the champions of, transforming local economy, like she said about rural development. That is the broader picture. But उसमें भी क्या उन्होंने village economy को transform किया ना. पोपट राव पवार थे. He also used this village in his village. What was the issue? There was a lot of liquor. People used to take liquor. The water scarcity was too much. From 1970s to 1990s, he transformed the entire village economy by plantation, by rainwater, making those tanks, all those things that he used to do. So why I am telling this, when you read the editorial, you pick up these things, you pick up these phrases. Okay, you pick up these phrases very, very carefully. For example, ethics का पेपर है, ये ऐसे के लिए plus ethics के लिए भी. For ethics paper, what you have to do? For example, there is this officer in Ambala, IAS officer in Ambala. What he did? He reduced stubble burning by 80%. All right. So जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं एथिक्स के पेपर में कभी आएगा कि कोई ऑफिसर का मैं कोट करना है, तो मुझे इस तरह से एग्जांपल्स नोट करने हैं. फॉर एग्जांपल, आप गुकेश की बात, गुकेश को he became the youngest grandmaster, world champion. तो इसको आप कहाँ यूज कर पाएंगे? Where will you use this? You will use this in courage of conviction, hard work, dedication वाले उसमें example, how a young boy who dreamt and he achieved his dream. तो उसमें आप इसको quote कर सकते हो, है ना? These are the things that you have to be very careful about. For example, there is this prime minister of, I think, Ireland की prime minister थी. उनको इल्जाम लगा उन पे इल्जाम लगा कि उन्होंने जो अपने फैमिली को रिलेटिव्स को होस्ट किया था और वो बिल सरकार ने पे किया. So what she did not wait for the inquiry, she paid the entire bill. So what is this? Honesty and integrity का example बन गया ये एक. समझ गए? Isn't this an example of honesty and integrity? ठीक है. एक और चीज जो आपको सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शन वाले बच्चों को नहीं, सबको, ड्रॉइंग द मैप ऑफ इंडिया. मैप ऑफ इंडिया और मैप ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. तो मैप ऑफ इंडिया बनाना है आपको. 30 सेकंड्स में आपको मैप ऑफ इंडिया बनना चाहिए आपसे. ठीक है. Not very clear, but this is how you have to make a rough schematic map of India. So if you understand the various physiographic divisions of India, यहाँ पे क्या है टॉप में? क्या है यहाँ पे? Himalayas. We have 3 Himalayas. What kind of Himalayas? Greater Himalayas, Middle Himalayas and Lesser Himalayas. ठीक है. यहाँ पे काराकोरम है, फिर लद्दाख रेंज है. ठीक है. यहाँ से रिवर्स आती हैं. कौन सी रिवर आती है यहाँ से? इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी है. यहाँ पे पंजनाड है, फिर गंगा आती है, फिर यमुना आती है, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, कावेरी है नीचे, महानदी है इधर. ठीक है. हम जस्ट ट्राइंग टू गिव, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है. इसके बारे में आपको यहाँ पे हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, आइलैंड ग्रुप्स है, लक्षद्वीप है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पे पाक स्टेट है आपकी.
ठीक है, यहाँ पे क्या सर्करिक एरिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, Western Ghats. Western Ghats, right? Here we have Eastern Ghats, they are broken and they meet in a place. That place is called Nilgiris. ठीक है, meet in a place called Nilgiris. ठीक है, lot of national parks. यहाँ पे एक नेशनल पार्क ग्रुप है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे. ठीक है, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? यहाँ पे सिक्किम में आपका मिक्स्ड बायो, इंडिया में सिर्फ एक ही मिक्स्ड बायोस्फीयर हेरिटेज है, मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज है. कौन सी आप बता सकते हैं? सर सिमलीपाल. कंचनजोंगा है यहाँ पे, कंचनजोंगा है. ठीक है, दैट इज अ मिक्स्ड हेरिटेज, कल्चरल एज वेल एज नेचुरल. ठीक है, दैट इज देयर. अब इंडिया में देयर इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क. कैन यू टेल मी वेयर इज इट? सर काइबुल लमजो. काइबुल लमजो, वेयर इज इट? मणिपुर. मणिपुर. वहां पे क्या मिलता है? सर आई एम नॉट श्योर सर, वन ऑन राइनो. नो नो, एनीवन एल्स? Floating national park, Fumdis, there are Fumdis. If you go to this, you will find this floating, you know, इस तरह के आपको floating planktons type मिल जाएंगे. That is why it's called, they become small islands, small island groups. ठीक है, they are called as Fumdis. These are floating. यहाँ पे you also find a Sangai deer, जिसको, ठीक है, यहाँ this is uniquely found in this. One horned rhino is found in Kaziranga. ठीक है, Kaziranga National Park, and highest percentage is found in Pobitora National Park. All of this we will read when we read environment, geography. Today I'm just trying to give you a brief overview. आपको इंडिया का मैप प्रैक्टिस करना है, इंडिया का मैप बनाना प्रैक्टिस करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू यूज दिस वेरी वेरी एग्जॉस्टिवली. और वर्ल्ड मैप भी, वर्ल्ड मैप में आपका ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया. ठीक है, तो यहाँ से आपका साउथ अमेरिका, आपने जल्दी से बनाना सीखना है, प्रैक्टिस से आएगा ये आपको. ठीक है, यहाँ से आपका इंडिया आ गया. दीज आर दी islands, island groups. Roughly you can make it. ठीक है, यहाँ पे क्या आपका कौन सा एक आइलैंड छोटा सा? एनीवन कैन टेल मी? साउथ अमेरिका की टिप पे एक आइलैंड है. कैन एनीवन टेल मी दैट आइलैंड? नो, टेरा डेल फुएगो. टेरा डेल फुएगो. और इसके बीच में एक स्ट्रेट है, उसको क्या कहते हैं? मैगलन स्ट्रेट. I'm just giving you a rough idea of the things that are going to come forward. Don't get intimidated by this. This is just to give you a rough idea. ठीक है, हमें अभी क्या क्या पढ़ने हैं? अपने करंट्स पढ़ेंगे. यहाँ से आपका इक्वेटर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, आपका ये कौन सा ओशन है बताएंगे? Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. This is Atlantic Ocean. Very good. This is Atlantic Ocean. यहाँ पे कौन सा ओशन है? Here. Pacific. That is a Pacific Ocean. Yes, this is a Pacific Ocean. And okay. Now, can you anyone name the currents? Here we have Gulf Stream. देखिए जो इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है 0 डिग्री. दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर. ये चीज याद रखनी है, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये आपको अभी कर्सरी तौर पे बता रहा हूँ. इफ दिस इज द इक्वेटर and these are the poles on both sides, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री. जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो करंट्स जाते हैं, वो कौन से करंट होते हैं? वार्म करंट्स. दे आर वार्म करंट्स. ऑलवेज रिमेंबर, जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ करंट जाते हैं, दे आर वार्म करंट्स. एंड जो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर आते हैं, दे आर कोल्ड करंट्स. ठीक है, बिकॉज दे ब्रिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द वार्मर एरियाज इन द इक्वेटर. ऑलराइट,
Here we have, which current is this, Sarvesh? Tell me. The current that comes here. Labrador. Can you tell me? Sorry? Labrador. Yes, this is a Labrador current. And this one I already told, Gulf Stream. And they meet at this point. This is called Newfoundland. ठीक है? अब जहां पे कोल्ड करंट और वार्म करंट्स मिलेंगे, वहां पे क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है. सो दैट इज द प्लेस ऑफ ग्रेटेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे बहुत एक बड़े फिशिंग ग्राउंड्स हैं. ठीक है? फिर यहाँ से आपका ये करंट जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. यहाँ पे आपका वो है, आपका जो ब्रिटिश आइल्स है. ठीक है? तो दो चीजें आपने, एक तो न्यूज़पेपर बता दिया आपको. न्यूज़पेपर में क्या क्या देखना है आपने. वी हैव सीन इन न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड एडिटोरियल, पिक अप द फ्रेजेस, पिक अप द केस स्टडीज. अलॉन्ग विद दैट एथिक्स के लिए आपको एग्जाम्पल पिक करने. क्या क्या पिक करना है? 3 चीजें. फ्रेजेस, examples for essay, examples for ethics. Also practice the map of India. Every day when you are free, जब एकदम आराम से फ्री बैठे हो, तो आपने इंडिया का मैप बनाना है, कोशिश करनी है, और वर्ल्ड का मैप बनाना है. ठीक है? ऐसा भी बन जाएगा आराम से, जल्दी जल्दी आप बनाएंगे, ऐसा भी बनेगा, आपका काम चल जाएगा. ठीक है? दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. दिस इज द बेसिक. अभी अब कुछ सवाल लेंगे हम, आपके कुछ क्वेरीज लेंगे, देन वी विल कंक्लूड टुडेज सेशन एंड टुमारो हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे. प्लीज टेल मी, आस्क मी एनी क्वेरीज नाउ. किसी के भी कुछ भी सवाल है रिगार्डिंग द क्लासेस, और कुछ और सुझाव भी हैं किसी के, तो वो भी हम लेंगे. Sir, will the recordings are recording available. One by one, please. Who is Mr. SK? SK, please introduce yourself first. Put your camera on. Am I audible to you? Please introduce yourself. You can join when you are free. You can leave the session now. Yeah, anyone else has any queries? Sir, I just wanted to ask whether we have, if we are not able to attend any class, will the recording of the class be available? Yeah, definitely. Yes, you will be getting all the recordings. You will be getting. That's not a problem. Right, sir. But we will advise कि class attend करें, एक regularity maintain रहती है. Unless you will get all the recordings, but I would advise you to attend the class. Right. That way you will be able to, keep pace, and जो क्लास में इंटरेक्शन होती है वो आपको रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगी ना. वो आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं. Obviously that is also fine, but class is always advisable. So Yeah. do we Saurabh? start answer writing sessions from day first? No, we don't start answer writing. We will have answer writing sessions. First, let's make some ground. Let's make some, we will have long 3 to 4 hour answer writing sessions once we have covered some ground. जब आपको थोड़ा सा Yes, एक, तभी मैंने आपको एक्टिविटीज क्यों बताई है, ये न्यूज़पेपर पढ़ना और एग्जाम्पल्स पिकअप करना, ओपिनियंस बनाना. क्योंकि अंदर जनरली आपको कोचिंग सेंटर ये बताएंगे आंसर लिखो, आंसर लिखो. आंसर तब तक क्या लिखोगे जब तक पढ़ाई कुछ नहीं है. तो जी आपको सर. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है. चीजों को पढ़ोगे, आपका रुझान बिल्ड होगा, फिर ग्रेजुअली आप आंसर राइटिंग लिख करोगे, तब फायदा है. तो आफ्टर 1 week, 10 days, 15 days, we will have maybe a 2-hour answer writing session itself. Yes, Okay, let's do a mock answer writing session today itself. Let's do it. Pick up your pen and paper. Yes, sir. Let's do it. Why not start? Let's see where you are. Please, everyone, you can put your videos on now because I want to make it a serious affair.
During the class from tomorrow onwards, be seated properly and put your videos on and audio on mute during the entire class. Should I give you the question? Yes, sir. Is the text audible, right? Text visible? Yes, sir. Yes, sir. I think time is 4:40. I'll give you 10 minutes to write. Whatever you feel comfortable to write. Feel completely comfortable. The question is visible? Yes, sir. Analyze the implications of the conflict in the Middle East on India's interest in that region. Yeah. Whatever understanding you have of the situation, please write it. You can start writing, I think. I'm giving you a few hints. You can take cues from there. I think now it becomes a little easy.
Feel very comfortable. This is not good. Nobody's going to judge you on this. This is simply to train you to think. Try to connect about India's role there. What should be India's approach? What are the India's interests in that region? Students who have joined now can introduce themselves. In the meantime, others can write. Someone with the name iPhone has joined. You can introduce yourself. Are you guys able to write it? Or finding issues? Let's conclude in another minute or so. Let's conclude, and then we'll have a short discussion. Last 1 minute, guys. Okay, let's conclude. जितना लिखा है उतना काफी है. Let's discuss it then. Let's wind it up, guys. Let's discuss now. I think who wants to take the lead? I think the only thing in this program is going to be you have to be showing complete involvement. That is going to be. We're not going to have a monologue here. It's going to be complete discussion here. So let's see who takes the lead. Sir, I'll take the lead. Okay, go ahead. Sir, I could write only 2 points that rises Just give me the points that you've written. Don't rises in oil prices. Mhm.
which will affect the oil trade in India. And second is a return of Indian nationals to the parent country, which will have effect on foreign reserves as well as gross national product. Okay, good points. Good points. Good idea. Very good. Who else? Who else wants to give some points? Saurabh, Anjali, Kajal, Zubin, Vishwajit, Shubhankar. Like India is also dependent on Israel as is an all-weather friend of India and has helped in during the Kargil war also. And it Let's write the also point that supported. just a moment. Let's write down the point that first Sarvesh has mentioned. You talked about rising Rises in oil prices. rising oil prices and return of the expatriates, right? Return of the Yes, sir. Indian NRIs. That is what you're talking. What was your point? Like India is in a dilemma whom to support, as India follows alignment because in the national interest, India is also having favor from the Israel, and it's also equally favoring the Palestine. Like Israel helped India in defense sector and farming sector. So due to that, chronology has been hampered. Good points. Who else? Sir, economic interdependence engagement. And also it has hampered the trade. Okay, that is there. Plus trade ties, economic interdependence. Yes, sir. Any other points? Anyone wants to pitch in with? Indian migrant workers. Yeah, that we talked about NRIs plus migrant workers. Any other points? Sir, I would like to add on with resource scarcity and the environmental challenges which are being faced right now. What kind of environmental challenges? Yeah, like due reduction in oil resources, water scarcity is there, plus the environmental damage that is being caused. Okay, All very those good. things. Good points. Good points. Who else? और points आ रहे हैं किसी के दिमाग में? And so it is also hampering that India Middle East Europe corridor. So this war. IMEC. Yes, sir. IMEC. Good, very good. Take the lead. Take the lead. This is how we, try to think. Thinking is very important. Mains में आपको ideas generate करने हैं बहुत quickly जब answer writing करनी है. You have to quickly generate ideas. See, all of you have given so many ideas and see we have a full answer here. This is how we have to approach. This is the task of a teamwork. This is how it functions. So let's do a 60-second exercise now. I'll give you 60 seconds. Please keep your cameras on and just pen and paper on ready. I'll give you like a 100-meter dash now. This will be a 100-meter dash. I'll give you 60 seconds. And be honest, just stop writing when 60 seconds are ended. I'll give you a term. You have to randomly write like whatever comes. Like if I talk about a dog, you talk about tail, or whatever it comes, black color dog or which breed. I'll give you an exercise. Whatever comes to your mind, just write randomly. Don't write sentences, just write that word. Okay? So the word for you is Himalayas. Write whatever comes to your mind. Your time starts now. Write as many ideas that come to your mind, randomly, whatever comes to your mind. It could be any random idea. Don't limit your mind.
let your mind fly to any imagination, anything of that comes to your mind. Out of the 20 ideas, maybe 5 will be relevant, but that's okay. The exercise is to let you open your mind. Last 10 seconds. Time up, guys. Let's be honest. Let's stop it. Let's stop it. Okay. So who wants to tell what are the ideas one by one? Honestly, let's see what are the ideas that you come to you. Let's start with Kajal. I think your phone is on mute. I think unmute yourself. Unable to hear you. Yeah. First idea that came to my mind was Tethys regarding the origin of the Himalayas, then the three ranges. Just mention the ideas that you've random. Just list down the ideas. Okay. Don't explain them. Beauty, tourism, weather, geography, resources, pilgrim, rivers, flowers, soil, diversity, nature. Very good. Very good. Very good. This exercise is successful. Kavita. I think unmute yourself first, please. Unmute yourself. Yes, sir. Three ranges, rocky, snow-covered, home to high biodiversity, some of them endemic, like snow leopards and Himalayan brown bear, helps to protect from extreme winters and monsoon. Good, good. Very good, very good. Major Helps to number? prevent the escape of monsoon. Okay, very good, very good. Sir, the coldest region, cold and dry, snow tops, snow leopards act as a barrier between us and the enemies and the rivers. Right. Very good. And Zubin? So, wildlife, rivers, protection from the cold. जो लिखा है वो बोलो, मतलब अभी नहीं सोचना है, जो लिखा है वो बोलो. Protection from the cold fronts. Shubhankar, you have to stop writing. Three Himalayas, greater, upper, and middle. And yes. Okay, good. Shubhankar, go ahead. Unmute Sir. yourself first. Sorry, sir. Yeah, go ahead. Border disputes, spiritual rituals, and most important जो मुझे first मेरे दिमाग पे hit किया, adventure to tourism, and Okay, also very good. studies. Yeah, please go ahead. Sir, यही था sir. ठीक है, good. Anybody left? Saurabh, Sarvesh? Sir, mountain, natural resources, rivers, tools and travels, religious, spiritual, land, form, geography, natural resources, diversification. Yes, sir. Okay. Vishwajit? Yes, sir. Great heights, top of the world, aesthetic beauty, guardian, shelter, tourism, adventure, and young mountains. Very good. Sarvesh? Sir, Himalaya is known as Mighty Himalayas, one of the famous trekking spots. And नहीं, आपको explain नहीं करना है, आपको बस जो आपने कॉपी पे लिखा है जो points वो बस point पर. Mighty Himalaya trekking spot, and recently it is getting eroded due to climate change. Okay, good. Who else is left? I think Anjali, Aditi. I think you can mention. Yes, highest peaks like glaciers, rivers, tourism. Okay. Aditi? So mountain range, river, nature, medicine, biodiversity, and its influence on monsoon. Okay, wonderful. So let me ask you one question now. When you were doing this exercise, did it put pressure on your mind? Did it put you under some pressure? Were you forced to think? No, sir, it was coming naturally. Okay, for you it could be. What about others?
Yeah, did. Sir, it was You were like, made to think. You were made to think, right? You were made to get inside your head, because time crunch was also there, 60 seconds. Also, you had to think about इसमें क्या क्या relevant points होंगे. So what was the thoughts that were coming into your mind? the first thing was that in 60 seconds, what all should be accommodated? What should be the sequence? Exactly. Any others would want to tell me कि आपके mind में क्या चल रहा था जब आप exercise कर रहे थे? I thought 60 seconds is too less. Yes. That's the idea. See, the idea of this exercise is, ये mains में this exercise is called brainstorming. This exercise is called as brainstorming. So whenever we have to write mains answers, आपको 7.5 minutes मिलेंगे एक 10 marker लिखने के लिए. You know about the mains pattern. You have 20 questions in GS, right? And 10 markers and 15 markers. जो 10 markers हैं उसमें आपको 7.5 मिनट के अंदर लिखना है. आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सोचना भी है और लिखना भी है. That becomes a great challenge. उसके लिए this exercise is very important. हम ये exercise बीच बीच में करते रहेंगे. आज बड़ी ही एक easy topic दिया आपको. When we do this later, we will pick up a topic when we have read some few days. आपको टॉपिक देंगे ताकि आपका माइंड सोचने पे मजबूर हो जाए कि किस तरह से आपने, जब भी ऐसा एक्सरसाइज होता है, फॉर एग्जांपल हिमालयाज, आपने सिर्फ वो टर्म्स लिख दो रैंडम ऐसे पेज पे, ऐसे समझ लो एक होता ना, एक स्पाई क्या करता है, इधर उधर पूरा अपना जॉट डाउन करता है, उस तरह से आपको पूरा वो लिखना है. हिमालयाज, मिड हिमालयाज, पीक्स, माउंटेन्स, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर्स, एडवेंचर टूरिज्म, Rajaji National Park, Hemkund Sahib, there is Northeast, Western Himalayas, Eastern Himalayas, Galwan Valley, Sikkim Himalayas, then we have Lipu Lake, all these things, Indo-Nepal issues, India-China issues, then we have Karakoram Highway, all these things. Let your mind open up a little bit more. हम और कुछ भी बात कर सकते थे, हम climate change के बारे में बात कर सकते थे, हम monsoon के बारे में बात कर सकते थे, Tibet, which is the source of, Tibetan high, which is one of the reasons, causes or responsible for the Indian monsoons. Then we do Kailash Mansarovar, that is also. We talk about Mount Everest, why it did not come your mind. Sagarmatha, Kanchenjunga is there. Northeast की कौन सी peaks है, national parks हैं, Jammu Kashmir में, then valleys, then Dehradun, all these things. Whatever remotely or closely connects to that topic. Why this is important? For example, tomorrow we are talking about parliamentary standing committees. We are asked to discuss about what is the relevance of a parliamentary standing committee in India's democratic setup. तो वहां पे we don't have to limit ourselves. Quickly we have to answer कि एक parliamentary standing committee होती क्या है, इंडिया में कितनी parliamentary standing committees है, राज्यसभा में कितनी है, लोकसभा में कितनी है, what is the process of scrutiny, what is the role, what are the JPCs. तो वो आप जब पढ़ोगे तो आपका knowledge तो widen होता जाएगा, but the exercise remains the same. Exercise remains the same. You have to quickly think. That is going to be the approach. Okay. So what are the takeaways from today's session? Did you find some value from the today's session? Because tomorrow we are getting into serious business. We are starting with geography proper and polity proper. So today's session was to orient you into the process. आपका ये schedule रहेगा, और every week, like for example, when we have classes, every weekend, we will have a review session also. Every Saturday evening or Sunday evening, we will keep a session. After a week of classes, we will keep a review session where we will assess कि आप लोगों ने कितना उसको पढ़ा है. ऐसा नहीं होगा कि आपको हल्के में छोड़ दिया जाएगा. अभी कल से सबकी वीडियोस ऑन रहेंगी और ऑडियो म्यूट पे क्लास में. I will not have to repeat that again. That is the bare minimum, because you need to be properly sitting in the classroom, like very sincerely. That is going to be the first thing. वो फौज वाली कहावत मैं फिर से दोहराऊंगा कि रीढ़ की हड्डी हमेशा आपकी इरेक्ट होनी चाहिए, physically, morally and spiritually, हर तरह से. And this is going to be that when people are sitting there up there in Siachen, -50 degrees. अभी यहाँ पे तो इतनी ठंड नहीं है, तो we have to be a little more responsible and disciplined in our discourse. Okay, are we on with it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So how's the sir. Josh? How's the Josh? Hi, Hi, sir. sir. It's not high. I think whenever I visit schools or colleges, and initially the Josh is very low. And when I ask second or third time, then it bursts the auditorium. So I think it should be high. The Josh should always be high. Okay? Because what is important is we may have moments of disappointment. We may have moments where we feel disappointed.
low motivation is there, not feeling like studying. एक चीज याद रखना कि your motivation may fall. Please put your videos on for a while. We'll conclude in 5 minutes. We'll have a kind of discussion. Yeah. So see, our motivation, as Major Anubhav will also vouch for that. In Fauj also, motivation may fall, but the discipline, the commitment that is there, that is what holds us through. जब आपका वो जो 55 किलोमीटर रन बैक होता है अकेडमी में, IMA में या OTA में, तो वहां पे मोटिवेशन से ज्यादा वो जो कमिटमेंट होती है कि यस माय टीम हैज टू विन, दैट हैज टू बी देयर, दैट थिंग हैज टू बी देयर. तो आपकी मोटिवेशन फॉल करेगी, दैट इज वेरी नेचुरल. अब 10-15 दिन के बाद, 20-25 महीने के बाद आपको लगेगा कि शायद मेरे से ये नहीं होगा. एग्जाम पास आने वाला होगा, प्रीलिम से एक हफ्ता पहले लगेगा कि शुड आई क्विट दिस अटेम्प्ट, शुड आई डू दैट. बहुत सारे मेंटल थॉट्स आते हैं. दैट इज वेयर योर डिसिप्लिन कम्स इन. डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट इन अ वे. आपको आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आपको अपने माइंड को अपने इमोशंस के ऊपर रखना है. आपको वो करना है जो जरूरी है, ना कि जो आप फील कर रहे हो वो करना है. You have to do what is important rather than what you feel like doing. Don't do what you feel like doing. I may feel like going for a trip, but that's not what will land me in the job. I may not feel like watching, I may feel like watching a movie, Netflix पे जाके एक सीरीज देख लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा. पर that is where discipline comes into the picture. For the next 1 year, मैं ये चाहूंगा आपसे, 16 घंटे नहीं पढ़ना है किसी को. ये मिथ है ये 16 घंटे वाली, इसको छोड़ दो. आपको 8 से 10 घंटा रेगुलरली पढ़ना है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, आई डोंट थिंक यू एनी एग्जाम इज क्रैकेबल. लेकिन वो 8 से 10 घंटे रोज होने चाहिए. 6 दिन आप ईमानदारी से पढ़ो, संडे को आधा दिन पढ़ो, संडे का जो सेकंड हाफ है वो ब्रेक ले लो, बिकॉज कूलिंग ऑफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बट ब्रेक तब लेनी है, ऐसा नहीं है कि संडे पूरे 5 दिन भी नहीं पढ़ा, फिर संडे को यार अब तो मेरी ब्रेक आ गई, अब तो मैं पढ़ूंगा नहीं. वो नहीं. 6 दिन पढ़ना है पहले, 6.5 दिन, फिर आधा दिन की वो ब्रेक लेनी है. और वो ब्रेक भी जरूरी लेनी है. शाम को संडे को 3 से 6 या 3 से 5 आपका गो फॉर अ वॉक, गो आउट विद फ्रेंड्स, मे बी गो वॉच अ मूवी ऑल्सो. बट बाकी के 6 दिन देन यू शुड बी लाइक पूरा गायब हो जाओ. दुनिया को पता ही नहीं होगा आप क्या कर रहे हो. दुनिया को पता ही नहीं होना चाहिए, खुद को नहीं पता होना चाहिए. आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस. यू नो, I was talking with this, I had this session with this gentleman from Ohio, Cleveland. So he's in the US Hall of Fame. So we are discussing this concept of oneness. So what is oneness? The great orchestra players, great musicians, they produce their best music when they are dissolved in the process, when they are not aware of their own selves, when they are totally like, they become the music. They are not playing, they become the music. And your best preparation will happen when you become the process, when you don't know that you are existing in the study process. जब आपको पढ़ना फील हो रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, it means some amount of detachment is lacking still. You have to dissolve. जिस टाइम आप पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं होना चाहिए टाइम कितना हो गया. टाइम का एहसास ही नहीं होना चाहिए आपको लगना चाहिए टाइम तो ऐसे बीत गया. वो आप माइंडसेट लेके आओ. पढ़ाई को एक एडवेंचर बनाओ. अगला 1 साल ऐसे बनाओ कि आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत 1 साल हो जाना चाहिए. आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दैट आप उन 99% लोगों से अलग हो चुके हो जिन्होंने ये डिसीजन लिया है ये एग्जाम देने का. सक्सेस फेलियर बात की बात है. सक्सेस फेलियर इज लाइक इट हैपेंस इन लाइफ, बट you have demarcated yourself from the cut above the rest. You're cut above the rest. You've chosen the road less traveled. And once you've done that, now it is your responsibility to make yourself proud. Leave the world. दुनिया को छोड़ दो. दुनिया को आप अकाउंटेबल नहीं हो. यहाँ जो हम बच्चे हैं, जो आप कैंडिडेट्स आज यहाँ ज्वाइन हुए, इनमें से आप एक दूसरे का कंपटीशन नहीं हो, आप खुद का कंपटीशन हो. द ओनली कंपटीशन इज यू. आप किसी के साथ कभी कंपीट कर नहीं सकते. अगर आप कल जो किया था उससे आज 0.1% बेटर हो, देन यू आर अ विनर. तो आपको अपने साथ देखना कि यार कल मैंने अच्छा पढ़ा था, आज मैं उसको मेंटेन करता हूँ, या कल अच्छा नहीं पढ़ा था, आज उसको कॉम्पनसेट करता हूँ. दैट अप्रोच हैज टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट, लेट्स कीप इट लाइक नेक्स्ट 1 month first. Let's keep it for the next 15 days first. Last 15 days of this year, let's make the next 15 days of this year the most amazing and exciting adventure of life. ये 15 दिन आप इतना जबरदस्त एक हेड स्टार्ट ले लो
कि अगले 6 महीने जो प्रीलिम से पहले आपके होने वाले हैं, आप मतलब इन 15 दिनों में आपसे हार्ड वर्किंग पूरी इंडिया में अभी कोई नहीं होना चाहिए। अगले 15 दिन यू शुड बी द मोस्ट सिंसियर हार्ड वर्किंग civil services aspirants in the country. That is the approach. Let's keep it 15 days at a time. Let's do that. Are you on this with me? Yes, sir. Yes, sir. Can we do this? Can we do this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. That's the answer I wanted. So let's start with this. Let's start with the motivation. Let's start with the positivity. But I always keep saying motivation will die. Discipline should not. कभी कभी ऐसा लगेगा दिमाग में स्ट्रेस होगी, घर वालों ने डांट दिया, किसी दोस्त के साथ कुछ आर्गुमेंट हो गई, तब क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, बंदे का पढ़ने का मन नहीं करता, मेरा अपना नहीं करता था. बट व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ इन दोज टाइम्स कि दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, एंड आई डिड दैट. वही करना है आपको, उस टाइम पे आपको ये करना. अगर उस मोमेंट में देखिए, एनीवन कैन फील हैप्पी व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइट. It's on those cloudy days that you will remember कि यार उस दिन मेरे को बुखार भी था, मेरा मूड भी अच्छा नहीं था, पर फिर भी मैंने उस दिन एक्स्ट्रा एफर्ट मारा. उस दिन सोचना है आज तो पढ़ना ज्यादा है, आज तो अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ गया, आज तो मैं मतलब करके दिखाऊंगा, मतलब आज तो मूड खराब है, आज ज्यादा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है. तो ये माइंड में रखनी है अप्रोच आपने. ऐसे करोगे तो फिर अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी डिफरेंशिएट करेगी ना. आप एक दिन 16 घंटे पढ़ लोगे, अगले 2 दिन पढ़ोगे नहीं, वो नहीं करना है आपको. मेरे हिसाब से मैं आपको एक ही बोलूंगा, 8 घंटे आप अगले 1 साल मेक अ डायरी. आई यूज्ड टू डू दैट. आई वुड सी कि कभी कभी जब मेरा मोटिवेशन, मेरा डिसिप्लिन नहीं होता था, तो आई वुड डू दिस फॉर 1 मंथ पीरियड. आई वुड मेक अ डायरी, आई वुड राइट कि आई वुड माइक्रो मैनेज माई टाइम ऑल्सो, कि मैंने इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ लिया है, मेरा वो टाइम कहाँ, फिर मुझे पता चलता था. और फिर मेरे को लगता था मेरे को और पढ़ना है अभी, कि दैट इज एक होता ना, एक इट बिकम्स काइंड ऑफ एक्साइटमेंट कि मेरे को ज्यादा पढ़ना. जब 1 घंटे के बाद एक दिन 8 घंटे, एक दिन 5 ही घंटे पढ़ा है, तो फिर लगता है यार मेरे हफ्ते के घंटे तो कम हो गए. शुरू से हम ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं खुद को, जब हम डिसिप्लिन कभी बिल्ड करना हो. वंस यू आर इनटू दैट जोन, फिर तो इट टेक्स ओवर. There were days when sometimes I would sit at 10 in the night and it would be 6 in the morning. I wouldn't know कि सुबह कब हो गई. ऐसा भी होता है जब आप घुस जाते हो पढ़ाई में. When you read something that is very interesting, आपको टाइम का ही नहीं पता चलता. तो मैं आपको वही कहूंगा कि आप इंजॉय करो इस प्रोसेस को. आप यूपीएससी की जो तैयारी है आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी. सिलेक्शन तो एक प्रोसेस है इसका, बट आप एक लीडर बनोगे कल को. आप एक इमर्स होके देखिए, अपनी सेल्फिश परसूट को छोड़ दो. मैं हमेशा यही बात कहता रहता हूँ, जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, तब इंसान हताश होता है. फिर हमारा ना माइंड विचलित होता है. हमें क्या सोचना है, हमें एक अपने जो इस प्रोसेस है इसको फॉलो करना है सही तरह से, और एक बेहतर इंसान बनना है, और अपना बेस्ट देना है. रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. दैट शुड बी आवर अप्रोच इन लाइफ. Our idea, me and Abhinandan, when we sat down for about this program, our idea is not to prepare for you for civil services. That's very clear. We are very clear on this. We are not preparing you for civil services. We are preparing you to be leaders. Actually, we want to do that. If we can create 10 leaders out of here, आप आगे जाके 10 और लीडर्स को क्रिएट करोगे, देश कहाँ पहुंचेगा. दैट इज आवर आइडिया. तो थिंक ऑफ द विजन दैट यू आर एट दैट कस्प ऑफ हिस्ट्री. दुनिया के इतिहास में 10,000 साल पहले और 10,000 जो आने वाले साल है, आप उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हो, जो आज आप डिसीजन लोगे, आज आप एक्शन करोगे, वो वर्ल्ड का जो ट्रेजेक्ट्री है उसको शेप कर सकता है. महात्मा गांधी, ये कहने की बात होती है, he could have been any other person, but he chose a path that defined history. Why cannot we define history? Why cannot we be that harbinger of that change? Yes, we can be. We start today. Do we? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We do that, and that's we're gonna do that. So let's wrap it up here today, and tomorrow the motivation ends tomorrow. Grind starts. Motivation ends today. Grind starts from tomorrow morning. Be there at 7 p.m. and अब रगड़ा शुरू. अब वो हनीमून पीरियड हो गया खत्म. आज थोड़ा सा आपको पेपर करना था, आपको थोड़ा सा ट्रैक पे लाना था. कल से आप आ जाओ मैदान में, अपना पूरा रक्सैक और पूरा वो जो लेके आ जाओ तैयारी से, और सिंसियरली पढ़ो.
बड़ा आसान है सब कुछ, इंजॉय करके पढ़ो, मजेदार तरीके से पढ़ो, क्रैक करो इस एग्जाम को। इस एग्जाम की औकात नहीं, आप बड़े हो। हमें हमेशा खुद को एग्जाम से ऊपर रख के देखना है, एग्जाम हमसे बड़ा नहीं है। हम वी आर अ they say we are a ocean in a drop. Actually we are an ocean in a drop. We are infinite, but we think we are limited. We are not limited. We limit ourselves. लिमिट यहाँ है, इसको तोड़ दो लिमिट को, फिर देखो मजा आएगा ना जीने का। एग्जाम बहुत छोटी चीज लगेगी, एग्जाम क्लियर करने पे फोकस मत रखो, फोकस रखो खुद को उतना परिपक्व बनाओ कि एग्जाम हो ना हो आप वो इंसान बन जाओ, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपको किसी ओहदे की जरूरत ना पड़े अपना तारफ देने के लिए, आप वैसे इंसान बन जाओ। तो यही हमारा मकसद है। अगले 6 महीने में, 1 साल में, वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट टू ट्रेन यू लाइक दैट। दैट्स द आइडिया, दैट्स द अप्रोच। ओके, ऑल द बेस्ट एंड let's meet tomorrow for the classes. And any doubts before, we'll just couple of minutes, any doubts anyone has regarding the classes, they can ask, and then I'll wrap up. किसी का कुछ डाउट है? Sir, from when you will start the CSAT classes, sir? CSAT classes will start in another 15 days. Okay. First we'll do with GS. CSAT का weekend classes करेंगे हम, weekend पे रखेंगे, है ना? Because it's important to start CSAT now only, क्योंकि critical है, CSAT clear करना is also very important. So we'll start in maybe 2 to 3 weeks. We'll start CSAT also. ठीक है? Sir, only one last question. Yeah, please. Sir, prelims, now it is means we have to do, now we have got the roadmap. But sir, the main challenge is the mains. So sir, how will we tackle that of answer writing, because it is the real challenge? Everything will be taken care of. Mains, see, prelims is important, but mains and interview, not just mains, interview is also important. Interview is also very critical. So once we are into a month of preparation or 15-20 days of preparation, we will have answer writing sessions. But answer writing sessions, as I told earlier only, will be relevant once you have a certain base. So we will review your answers. पहले हम आपको एक exercise देंगे, आप कुछ answers लिखने के लिए आपको देंगे. We'll review that and फिर देखेंगे आपका कितना किस level पे हो, आप अभी कितना अभी काम करने की जरूरत है, उस हिसाब से we will do that. We'll also have mock interview sessions also with you every month or every 15-20 days, so that अगले 6-8 महीने में आपकी जो पर्सनालिटी की फाइन ट्यूनिंग है वो भी होती जाए, क्योंकि इंटरव्यू मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की तैयारी तब नहीं हो सकती, अभी से करनी पड़ेगी, है ना? तो ये एक अप्रोच रहेगी। और किसी का कुछ डाउट है? Any doubts? So No, I sir. think okay, wonderful. So good day guys, and see you tomorrow in the class morning 7 p.m. Abhinandan sir will take your polity class, and Yes. I will meet you at 5:15 because Sarvesh has an optional class. So let's keep it 5:15 because he should also be able to attend the class. So 5:15 tomorrow. I'll see you in the geography class, first class. So get your books and Yes, sir. keep them shy. All the best. Good luck. Good luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Good luck. Good luck.